All right. Good evening, everybody. Namaskar. My name is Zubin Zaveri, and I welcome all of you to this particular webinar. And in this webinar, the topic for this webinar is ratio charts. All right. Now, how will we go? Yeah, hi, Mr. Cap. Right. Okay. Uh, So what is a ratio chart? Ratio chart means that there are two stocks or two indices that you compare their strength against each other, and one you buy and another you sell depending on their strength. So basically, for those people who are pure speculators, probably they may not like this, but those who want consistent and hedged returns, and want some strategy, then for them today's webinar can give lots and lots of ideas where you can make kind of a safe returns uh, by hedging, and in ratio charts. So today's line of topics is, first we'll understand what is ratio charts, strike के platform पे where can we access ratio charts, how to read them. All right, and once we learn how to read the ratio charts, then I'll show you one particular strategy which can be used for trading. All right, so let's get started. And before we get started, for those people who don't have strike platform, you can log into web.strike.money and start your subscription. And from the link, if you click on the link given in the description below, from there you will get some additional discounts, like around 4,700 rupees for a year, and 2,600 rupees for 6 months subscription. So you can go there, subscribe, look at charts and analyze with us together. All right, so let me begin and share my screen. uh, Share screen, entire screen. Okay, share. All right, and over here I'll just minimize myself. Okay. So, also before going ahead, if you have any doubts, questions, feel free to type it in the comment section. And towards the last 15 minutes of this particular webinar, we will have a dedicated question and answer round where you can ask me any questions, and I'll make sure to answer all of them. All right. Okay. So let me begin and take you to the Strike platform first. All right, so this is the home screen of Strike platform, and from here, if you want to go to ratio charts, you can click on the analyze button over here on the left hand side, and below that you will find ratio charts. And the moment you come into the ratio charts over here, this particular screen will open up. There will be blank. If you are using it for the first time, there will be a blank screen over here. So what you can do is, here there are two buttons given, select and select. So what ratio do you want? Say for example, you want to have a ratio of ICICI Bank, so you can start typing in the name over here, and you want to compare that with, let's say, HDFC Bank. All right, so ICICI Bank and HDFC Bank, say add a pair. So you will get this particular ratio, and once that ratio is clicked, ICICI divided by HDFC, over here you will get the candlestick chart of what is there in the numerator. So in this numerator is ICICI Bank. So you will get the ICICI Bank numerator chart over here, candlestick chart, and below this line is the ratio between ICICI and HDFC. All right. So, what exactly this means is, let me first help you understand over here. रंजीत कुमार जी, ईएमए और डीएमए के बारे में हम लोग बाद में कभी बात करते हैं.
आज हम लोग रेशियो चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में अगर समय रहा तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको ईएमए और डीएमए के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है। सो रेशियो चार्ट्स हम लोग ने जैसे अभी बताया कि इट इज नथिंग बट न्यूमरेटर। हम लोग ने फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक लिखा और डिनोमिनेटर में एचडीएफसी बैंक लिखा। सो द रेशियो इज आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस सपोज 500 है और एचडीएफसी का प्राइस है सपोज लेट्स से 250। तो रेशियो कितना आएगा? जस्ट एन एग्जांपल है, ये जस्ट एन एग्जांपल है। सो इन लोग का रेशियो क्या आएगा? रेशियो विल बी 500 डिवाइडेड बाय 250 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ऑलराइट। तो जैसे जैसे ये परफॉर्म होता रहता है, मान लो दूसरे दिन ऑन डे टू आईसीआईसीआई बैंक बढ़ गया, मान लो 750 हो गया और एचडीएफसी बैंक है, या राउंड नंबर लेता हूँ, मान लो ये 1000 रुपया हो गया और एचडीएफसी बैंक जो है वो मान लो लेट्स टेक व्हाट जस्ट टेक लेट्स टेक 800 हो जाता है। ऑलराइट, ऑन से मंथ वन और मंथ टू। ऑलराइट। सो रेशियो कैसे चेंज होगा इसका? अभी रेशियो जो चेंज होगा 100,000 डिवाइडेड बाय 8, सो इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 800। सो 1.3 रेशियो जो है वो कम हो गया। ऑलराइट। सो क्या हो सकता है माय फ्रेंड्स कि ये जो रेशियो की लाइन जो है वो या तो ऊपर जाएगी या साइडवेज जाएगी या फिर नीचे आएगी। ऑलराइट, दैट यू कैन सी यहाँ पे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेशियो का चार्ट है। तो या फिर ये लाइन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। जब लाइन इस तरीके से ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन द रेशियो लाइन इज गोइंग अप, इट मींस दैट the stock in the numerator, in this case NSE index, that is NSE Nifty 50, that is outperforming the bank Nifty. All right. So जब लाइन ऊपर इस तरीके से जा रही है, जब लाइन ऊपर जा रही है मतलब न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और अगर लाइन नीचे जा रही है तो रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे ये केस में क्या हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक तो बढ़ा, ओके, 500 से लेकर के 1000 डबल हो गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक वेंट अप इवन हायर। ओके, ये एक्चुअली 500 होना चाहिए था, अगर 500 हुआ तो रेशियो तो फ्लैट का फ्लैट ही रहता, लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक रोज हायर than the numerator, and because of that the ratio went down. All right. In another case as well, what can happen is if 500 becomes 250 and this 250 becomes, let's say, 100, what will happen to the ratio? In this case ratio will be 500 divided by 250, ratio will be 2, and in this case ratio will be 250 divided by 100, that will be 2.5. So ratio has gone up. All right, what has happened in this case? The ratio has gone up. Now, when the ratio has gone up, what does that mean? It means that the yeah, can you guys hear me? Am I audible? Am I loud and clear? Okay, there's someone just said there is some problem. Okay. You can keep typing in the comment section. Just let me know. Okay, thanks Jarvis for your confirmation. Okay, let's get back over here. So if the ratio has gone up, it means that the numerator is outperforming the denominator. In this case, what happened was that the numerator halved, but the denominator more than halved, मतलब वो और नीचे गया. All right. So if मतलब ICICI Bank went down by 250 points, but
comparatively. So it gave a correction of almost 50% over here. All right, but what has happened, the denominator has gone more than 50%. It went down. Okay, so again it under the denominator underperformed and the numerator outperformed. All right, so I hope ye basic uh, understanding has everyone got about this ratio chart. Yeah, the basic understanding is that whenever the ratio line is going up, it means the numerator is outperforming the denominator, and when this ratio chart is going down, it means that the denominator is outperforming the numerator. ओके अगर इतना समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस लिख करके मुझे दे दीजिए. Mahadev ji is asking, so ratio charts would help us to identify the strongest stocks in a sector, weak stocks. Yeah, also help to identify the stronger one. Yes, absolutely. Okay, so it ratio chart is just a ratio between two stocks. Okay, so you select a stock A, you select a stock B, or you select index A or index B, or you select one stock and one index. Okay, so ratio chart is nothing but trying to identify out of the two stock or index, whatever you select, which is outperforming the other. So if something is outperforming the other, you can have a hedge strategy by buying the outperformer and selling the underperformer. Okay. Now, relative to the benchmarks in Nifty, no, not relating to Nifty. So over here, you select, okay, here we have ICICI Bank and HDFC Bank ratio. So if this ratio chart is going up, so during this time, ICICI Bank share prices have gone up. And if you look at HDFC Bank chart, HDFC Bank chart would have also gone up. But ICICI Bank chart has gone up more than what HDFC Bank has gone up by. Okay, similarly, if you see that the ratio over here is going down, okay, the ratio is going down, it means that in this period share prices of ICICI Bank has gone down, and during this time HDFC Bank share prices may have also gone down. But over here, since the ratio is going down, it means the denominator is outperforming, and in this case share prices of HDFC Bank would have gone down a little bit. Okay, but ICICI Bank share price has gone down drastically compared to HDFC. So over here, there is a comparison between the two things, ICICI and HDFC. Now I can compare Nifty and Bank Nifty also. Okay, they are the two most tradable, futures, index futures over here. So you can compare these two also. You can compare, maybe say ICICI Bank and Nifty Bank, say add a pair. So over here, in this case, when you say ICICI Bank divided by Bank Nifty, and you see that okay, the ratio has gone up, it means that ICICI Bank share prices has outperformed Bank Nifty. Is that clear, everybody? Yeah, Mahadev ji, I hope I have made myself clear. Saurabh, thanks. Ranjit Kumar ji, thanks. Coming to RRG also, Mahadev ji, just hold on. Okay. How to use this ratio, Prashmin? Yes, I'm here to make you understand that only. But first, do you understand what does this ratio mean? If ratio is going up, numerator is outperforming. If the ratio is going down, denominator is outperforming. Okay, now very easy. If, so I'll write numerator and D for denominator. Okay, if numerator is outperforming, meaning when the ratio is going up, what can we do? We can buy the numerator and sell the denominator. Yes, if the ratio is going down, if the ratio is going down, in this case, what can we do?
in this case we will sell the numerator and buy the denominator. Did you understand? This is ratio, huh? It is not the share price. This is a ratio chart. Okay, this is the ratio chart. Okay, so when we buy one product and sell another one, it will be hedged. So we need to first understand which two things we need to compare. All right, so these are the general pairs which most of the people use. So you can compare one stock with its sector index. You can compare two stocks from the same sector, or you can compare two indices against each other, two tradable indices against each other. Is that clear? Yes. So now, very quickly, I'll come to this particular chart between Nifty and Bank Nifty. And yes, one more thing that I want to share with you is that this ratio chart over here, you can use it on an hourly basis, daily, weekly, or even monthly basis. All right. So I will share some of the examples which I have seen on the hourly basis. Are you all ready for that? Okay. So we will use hourly chart and we will compare Nifty and Bank Nifty. All right. So I have opened one tab over here wherein I have selected Nifty and Bank Nifty ratio chart, and I have selected this app also over here. Okay. Okay. Here there is Nifty and Bank Nifty. So I'll change here to, I'll change it. I will add Bank Nifty to Nifty. Add a pair. Okay. So awesome. What do we have over here is on this particular web app, we have Bank Nifty divided by Nifty. And on this Strike application itself, this is one application which you can download on your desktop, or on your laptop. All right. And so that you can use two things, two screens at the same time. And in the web browser itself, you can open up multiple tabs like this. All right, so this is one thing that you can do. Right, so we have Nifty, we have Bank Nifty divided by Nifty, and we have Nifty divided by Bank Nifty. So we have two ratio charts. All right, I've taken two things over here just to confirm that is it confirming with each other or not. All right, now let me take you to these examples over here on 9th of September. Okay, so let's go to 9th of September on the hourly chart. Okay, any doubts, questions, feel free to ask me, please. सर प्लीज स्पीक इन हिंदी. ठीक है. स्टॉक वेल्थ गुरु, आपका नाम तो मुझे बताइए प्लीज. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा यूज करूंगा. बाईलैंग्वेज में ये पूरा सेशन हम लोग करेंगे. लेकिन स्टॉक वेल्थ गुरु, अगर आप चाहते हो मैं हिंदी में बात करूं तो आपका भी नाम मुझे बता सकते हैं प्लीज. या जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ये जब तक लोड आ रहा हो तब तक मैं आपको दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. अभी लेटेस्ट जो आया था वो है 17th मार्च का. ऑलराइट, so 17th March over here. All right, 16th 17th March. ठीक है. So यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जनरल, ऑल राइट, अभी अभी यहाँ पे और एक चीज कंफर्म करने के लिए हम लोग एक और इंडिकेटर डाल सकते हैं, और वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI. ठीक है. सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से भी आपको पता चलेगा कि
किस में कितना दम है। तो बैंक निफ्टी की आरएसआई मैंने डाल दी है। 11 मार्च को ये ओवरसोल्ड लेवल से जा करके आरएसआई ने बाउंस बैक दिया, और समवेयर ओवर हियर यहाँ से जब गैप अप ओपन हुआ, तब आप देख सकते हो कि रेशियो चार्ट जो है ना, वो भी यहाँ से वो अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है यहाँ से ऊपर जाने की। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर किया कि इन केस यहाँ पे अगर रेशियो ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी से। ठीक है, बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी बेटर है। तो अगर मार्केट ऊपर गया, ओवरऑल मार्केट ऊपर गया, तो बैंक निफ्टी ज्यादा रफ्तार से ऊपर जाएगा कंपेयर टू निफ्टी। अगर मार्केट नीचे गया तो निफ्टी ज्यादा गिरेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। इज दैट क्लियर? सो मतलब एक को बाई किया, दूसरे को सेल किया, तो हमारी हेज पोजीशन रह गई। अभी यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। सो 48,384 पे हम लोग न्यूमरेटर जो कि बैंक निफ्टी है इसको बाय करेंगे, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में निफ्टी है। ऑलराइट, तो निफ्टी का भी आवरली चार्ट हम लोग कहाँ पे लेकर के जाते हैं? 17 मार्च को, 6 मार्च, 12, ये रहा 17, 18 मार्च हो गया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी को सेल किया और बैंक निफ्टी को बाय किया। क्यों? क्योंकि रेशियो चार्ट जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। सो 17 मार्च को बैंक निफ्टी जो था, ऑलराइट, उसका लॉट साइज था 30 शेयर्स का एक लॉट, और 48,415 पे इसको बाय किया। सो इतना आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई, अराउंड 14 लाख 15 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन इसको बाय करने के लिए आपको मार्जिन कितना लगेगा? सो अराउंड 1.5 lakhs। ऑलराइट, और उसके साथ निफ्टी जो है उसको हम लोगों ने 75 शेयर्स का एक लॉट है, तो इसको सेल किया। तो 22,477 पे इसको सेल किया, तो वो भी अराउंड 15-16 लाख जितना इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया, और इसको शॉर्ट करने के लिए अगेन 1.5 लाख। सो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 लाख का आपको कैपिटल लगेगा ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अभी 17 मार्च को ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से लेकर के निफ्टी जो है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी 17 मार्च से दोनों ही ऊपर गई, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा रफ्तार से गई कंपेयर टू निफ्टी। ऑलराइट, विच इज इंडिकेटेड बाय दिस रेशियो। ये और भी ऊपर चला गया, ये और भी ऊपर चला गया। ऑलराइट, सो अगर हम लोग ने मार्च का महीना एक्सपायर हो गया था, सो अगर एक्सपायरी पे अगर हम लोगों ने देखा होता, तो 28 मार्च को एक्सपायरी था, तो हम लोगों ने ये पोजीशन जो है बैंक निफ्टी जो बाई पोजीशन थी, लॉन्ग थी, इसको हम लोगों ने सेल कर दी, स्क्वायर ऑफ कर दी। सो +30 -30, और वो टाइम पे प्राइस था 51,538। ऑलराइट, और निफ्टी जो था, ऑलराइट, निफ्टी जो था उसका प्राइस कितना था? सो निफ्टी का प्राइस जो था ये भी ऊपर गया। ऑलराइट, और उसका प्राइस था अराउंड 23,495। ठीक है, सो बैंक निफ्टी हम लोगों ने बाई किया 48,450 15 में, और सेल किया 51,000 में। तो इसमें जितना प्रॉफिट हुआ, ओके, और निफ्टी में 22,477 में सेल किया और ऊपर में बाई किया, तो मतलब निफ्टी में हमारा लॉस हुआ। लेकिन नेट टू नेट अगर आपने इसका कैलकुलेशन किया, तो 17,340 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये माइनस फिगर से आप लॉस है ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सेल किया ना, वो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिखा हुआ है। तो जब सेल किया तो पैसा अंदर ज्यादा आया, तो ये माइनस मतलब 17,000 हमारा इनफ्लो हुआ। ऑलराइट, सो 17 मार्च को अगर हम लोगों ने ये किया होता, ये स्ट्रैटेजी को इस तरीके से, ओके, जहाँ पे देखो अभी कंपेयर करने के लिए ये भी देख रहे हैं कि निफ्टी डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, रेशियो चार्ट है, वो नीचे जा रहा है। ऑलराइट, और बैंक निफ्टी का जो रेशियो चार्ट है वो ऊपर जा रहा है।
सो क्लियरली यहाँ पे हम लोगों ने हेज पोजीशन ले ली होती, और अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें यहाँ पे 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, और उसके ऊपर 17,000 का प्रॉफिट। सो इफ वी मल्टीप्लाई दैट बाय 100, तो आपको अराउंड 5 to 6% रिटर्न्स, ओके, एक आध महीने के अंदर 5 to 6% रिटर्न्स हम लोग ने ये देखा होता। और क्या ये चार्ट और आगे लोड हुआ कि नहीं, एक बार वो चेक कर लेता हूँ। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई? 17th को हम लोग ने कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी बाय किया और निफ्टी को सेल किया? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? सो सिमिलरली मैंने कुछ पीछे अराउंड सितंबर से भी मैंने यहाँ पे डेटा लिखा था। सो सब ये सारा आवरली चार्ट पे ही था, और 9 सितंबर को वापस से रेशियो जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ से बैंक निफ्टी को तभी सितंबर 2024 में लॉट साइज कम था, तो बैंक निफ्टी का 15 का लॉट था और निफ्टी का 25 का एक लॉट था। तो वो हिसाब से एक एक लॉट पे अगर हम लोग ने किया, तो इस तरीके से रिजल्ट आया। 22,000 का प्रॉफिट हुआ था। फिर 27 सितंबर को वापस से एक बार आया था, लेकिन इस बार रेशियो जो था वो नीचे जा रहा था। रेशियो चार्ट जो था वो नीचे जा रहा था, इसलिए वहां पे बैंक निफ्टी को सेल करा और निफ्टी को बाय करा। ऑलराइट, सो एक बार मैं डेली चार्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 9 सितंबर से। ठीक है, डेली चार्ट कर दिया। ऑलराइट, और यहाँ पे 9 सितंबर कर देता हूँ मैं। सितंबर सितंबर 9th, सो 10th। ओके, सो ये कौन सा है? निफ्टी डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे जो आरएसआई भी जो है वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया था, और अराउंड 9 सितंबर को इंट्राडे में अगर आवरली चार्ट पे अगर देखेंगे, तो ये लेवल से यहाँ से जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, ऑलराइट, और फिर यहाँ पे एक यू कैन ऑल्सो सी कि अगर हम लोग इस तरीके से लाइन चार्ट भी अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, तो देयर वाज अ ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी, और तभी अगर बारीकी से देखें तो रेशियो जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पे था, और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय आया। ओके, ये लेवल पे बैंक निफ्टी बाय आई, और निफ्टी जो है वो उसको सेल किया। राइट, फिर उसके बाद 27 सितंबर तक ये पॉजिटिव ही रहा था। 27 सितंबर मतलब यहाँ पे ये जो टॉप बना वो, अभी यहाँ से जब ये टॉप बना 27 सितंबर को, ठीक है, 26 पे मार्क किया, ठीक है, 27, उसके बाद जो है रेशियो देखो, इसका रेशियो वापस से नीचे जाना शुरू कर दिया था ये। ऑलराइट, सो आवरली चार्ट पे ये एकदम से नीचे जा रहा था, और उसकी वजह से सेल बैंक 26 को स्क्वायर ऑफ कर दिया, और 27 को पोजीशन जो है उसको रिवर्स कर दिया। ऑलराइट, सो बैंक बाई था 9 सितंबर को, 26 सितंबर को बैंक निफ्टी को स्क्वायर ऑफ कर दिया, सेल कर दिया, और नेक्स्ट डे वापस से और एक लॉट सेल किया, और निफ्टी को बाई किया। सो मतलब यहाँ पे रेशियो नीचे जा रहा था, इसलिए इस तरीके से किया। तो कुछ 18,000 का फिर अराउंड 7 अक्टूबर तक, ऑलराइट, बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। सो इसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी में भी एक प्रॉफिट हुआ होता। सिमिलरली 10th अक्टूबर से 31st अक्टूबर भी एक बार यहाँ से रेशियो जो था वो ऊपर जाना शुरू कर दिया था। ओके, तो उसकी वजह से बाय बैंक निफ्टी सेल निफ्टी आया, और इसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। ऑलराइट, सो ये आवरली बेसिस पे हम लोग ने करा था।
आप डेली चार्ट पे भी अगर थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म आपको ट्रेड करना है, सो बेसिकली ट्रेड करना है तो डेली चार्ट से ज्यादा ऊपर वीकली मंथली पे ना जाइएगा। ऑलराइट, जो भी है आप आवरली यूज कर सकते हो या फिर डेली चार्ट यूज कर सकते हो। बेस्ट केस इज आवरली मेरे ख्याल से। ठीक है, सो ये रहा देखो, डेटा अच्छे से लोड हो गया है यहाँ पे। और यू कैन सी दैट फ्रॉम 12 सितंबर ऑनवर्ड्स ये रेशियो जो है वो ऊपर जाना शुरू कर दिया, और फिर यहाँ पे एक पीक आउट होकर के ये रेशियो जो है वो वापस नीचे जाना शुरू कर दिया। तो ये जो फॉल जो आया, ऑलराइट, ये फॉल बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा आया, इसलिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके यहाँ पे ज्यादा पैसा मिला, और निफ्टी को शॉर्ट करके वहां पे हमारा लॉस हुआ, लेकिन वहां पे लॉस कम हुआ। सो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी में वापस से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, Paas have just joined right now. Okay, so no problem, Parth. You can very well go through the recordings once again, but just to revise one more time, ratio chart है टॉपिक, और रेशियो चार्ट में सिंपल है दैट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां पे भी चार्ट आ गया। So if the ratio chart is sloping downwards, strategy क्या है कि न्यूमरेटर को शॉर्ट करो, डिनोमिनेटर को लॉन्ग करो अगर रेशियो चार्ट नीचे जा रहा है तो। अगर रेशियो चार्ट जो है, ओके, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज रेशियो चार्ट, so if ratio chart is going up, so in this case हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को बाय करके डिनोमिनेटर को सेल कर सकते हैं। ठीक है, any doubts, any questions so far? HS, yeah, please let us know. Okay, now coming, Mr. महादेव जी ने एक RRG के बारे में जिक्र किया था। सो अभी रेशियो चार्ट को RRG के साथ हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे देख सकते हैं, और कब सी प्रॉब्लम, एक रेशियो चार्ट का एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि अभी फिलहाल तो यहाँ पे रेशियो चार्ट जो है करंटली ये अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि ये कब मुड़ जाएगा, हाँ, या ऊपर ही चलता जाएगा। सो दैट इज वन प्रॉब्लम, वी डोंट नो whether this ratio chart will it remain up or it will come down. Okay, when it will come down, by how much it should come down. So there is one strategy जहाँ पे ये रेशियो चार्ट पे you can draw a trend line like this, and when the ratio chart, this particular ratio chart comes below, breaks down, okay, at that time this is bank nifty divided by nifty. So if this starts falling down and comes below the trend line, then what can we do, we can short bank nifty and buy nifty. करेक्ट, मतलब रेशियो चार्ट अगर नीचे जाना शुरू कर रहा है मतलब डिनोमिनेटर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो डिनोमिनेटर को बाय करो, जो आउट परफॉर्म कर रहा है उसको बाय करो, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको सेल करो। करेक्ट, yes, Mr. HS, this is fairly a new concept to most of the people. So I would suggest that this particular video that we are shooting right now, it is live. It will remain it's being recorded, and the recordings will remain on our YouTube channels. So you can go through this once again, and if you have any doubts, you can feel free to type it in the comment section. We will make sure that in whenever we are conducting the next webinar, we will try to answer your question. And if you are not, if you don't have Strike subscription, you can go ahead and subscribe to Strike now. All right, the link to subscribe will be given in the description in this particular video. All right, so problem समझ में आया? Did you all understand the problem with ratio chart?
The problem is that we don't know whether it will come down or it will keep going up. So now what to do? When should we take a trade? So one solution that I thought of is from the RRG, relative rotation graph. All right. So here we go. In the analyze section, last option RRG, relative rotation graph, we have यहाँ पे again same 60 minute daily weekly monthly time frame सब दिया गया है. Alright. So आप यहाँ पे 60 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जो है ओके इंडाइसेस है, ओनली इंडाइसेस दिया हुआ है. यहाँ पे आप केवल और केवल निफ्टी बैंक का है, निफ्टी बैंक ये रहा. सो केवल और केवल निफ्टी बैंक को आप ट्रैक करो. यहाँ से हम लोग 1 मंथ का जो है 3 मंथ्स, 1 मंथ, 3 वीक्स, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे. सो मैंने 1 मंथ का सिलेक्ट करके रखा है. सो आरआरजी के बारे में जिसको नहीं पता है वो सो व्हाट इज आरआरजी? आरआरजी के बारे में हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस भी किए हुए हैं. ऑलराइट. सिंपल सेंस में है कि अगर ये एरो जो है ओके वो राइट हैंड साइड है का तो या तो लीडिंग क्वाड्रेंट में है या वीकनिंग क्वाड्रेंट में है. इसका मतलब ये पर्टिकुलर बैंक निफ्टी जो है वो अभी लीडिंग क्वाड्रेंट में है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज ऑफ नाउ ये अपने बेंचमार्क निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है. So right now, Bank Nifty is outperforming Nifty 50, okay, on a 60-minute time frame chart. All right. So what can we do right now? We can buy Bank Nifty and sell Nifty. All right. But the best time to do this, okay, the best time to do this was when it changed the quadrant. Okay. अगर ये यहाँ पे होता 28 से लेके यहाँ पे 28 मार्च, टाइमिंग यहाँ पे क्या लिखा है? सो दिस वाज 27 मार्च. 28 मार्च का यहाँ से शुरुआत हुई तो 1 आवर और 2 आवर. ओके. सो ऑलमोस्ट अराउंड 11:15 बजे, 11:15, 11:30. Okay, what had happened was around 11:30 on 28th, that is yesterday, this particular arrow changed the quadrant from weakening to लीडिंग क्वाड्रेंट. ये नीचे से ऊपर आया, इंडिकेटिंग के इसमें बैंक निफ्टी में मोमेंटम बढ़ गया और ये ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को. तो ये ऐसे टाइम पे जब ये बॉर्डर क्रॉस करता है एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट पे, तो ये टाइम परफेक्ट होता है बैंक निफ्टी को बाय करके निफ्टी को सेल करना. क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? या डेली चार्ट पे भी अगर आप देख सकते हो. सो सी लुक एट दिस ओवर हियर. डेली चार्ट पे यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया था, मतलब ये टाइम पे बैंक निफ्टी वाज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी. बट देन व्हेन इट केम टुवर्ड्स दिस राइट हैंड साइड ओवर हियर फ्रॉम 24th of March, बैंक निफ्टी स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग निफ्टी फ्रॉम 24th of March. अभी 24th of March पे जाते हैं डेली चार्ट पे. ओके. ऑन 24th of March, 24th of March, हियर वी गो. ओके. वापस आवरली चार्ट कर लेता हूं मैं एक बार. ओके. सारे हटा देता हूं. 24th of March का स्टार्टिंग. Okay, so 11:15 over here. Let me remove this. All right. So on 24th of March से लेकर के अभी तक, if you can see the ratio, it has slightly gone up. Can you see this? 24th of March को रेशियो था यहाँ पे 2.18 पे और अभी चल रहा है 2.19 पे. सो 24th of March से लेकर के अभी तक बैंक निफ्टी हैज आउट परफॉर्म्ड निफ्टी. ओके. So this particular chart will help you out a lot. And the best time frame according to me, it would be hourly chart. So you can just do a testing that clearly अगर ये left hand side से अगर right hand side पे आ रहा है, all right, so that would be the very good time.
सो अकॉर्डिंगली आप फिन निफ्टी में भी अगर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे फिन निफ्टी को भी आप लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ ही चल रहे हैं, एक साथ ही चल रहे हैं। सो ये भी एक ऑप्शन है। और आप द बेस्ट टाइम एक ही बार आई कैन लेट मी शो यू। All right. So many times, see, many times it is coming from the improving quadrant to the leading quadrant. लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जा रहा है, ओके, फिर वापस राइट से लेकर के लेफ्ट में जा रहा है, अभी जब लेफ्ट से निकल करके जब राइट में आ रहा है, दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर। ओके, buy bank nifty, sell nifty. All right, so you can use the combination of RRG and try to look at the ratio chart and then accordingly take a trade. All right, new subscriber, could I get reference videos regarding strike platform using? Okay, yeah, sure, definitely. Edge with hedge, there are many videos that are available on our website. You can go to the learn section. There are webinars, how to use the strike platform. All the learning videos are given over here. And you can also go to our YouTube channel currently where we are airing. We have YouTube strike in English language. We have strike Hindi channel. We also have India charts channel. So on all these platforms, we have posted various videos on various topics to learn, okay, how to use strike, and also various topics on what are technical analysis, options trading. All these videos are already uploaded. All right. Any other questions relating to the topic for today, ratio charts? आई होप आपको समझ में आया हो, और यू लाइक इट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट जो है, किसी ने बताया कि नया कॉन्सेप्ट है मिस्टर एच एस, सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओवर हियर। सो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दिस रेशियो चार्ट जो है, speculation is gone. I don't want to speculate and increase my heartbeat whether the market will go up or go down. Irrespective, wherever it goes, whoever is, I will select the two options over here. I two stocks or two indices. I would buy one and sell other. All right, if the one which is outperforming, I will buy that, and the one which is underperforming, I will sell that. Okay, and keep my position hedged. And the objective is to make around 4 to 5% returns, or even 3% returns in a month is fair enough. And as I said, this you will require, if you can also try it out using the options. Okay, but I don't know how will options pan out, because I frankly have not traded accordingly. All right, but yeah, in nifty futures and bank nifty futures, I've shown you some of the data over here. And you can also, if you are new to this concept, try to do some paper trades first, and then once you feel confident, all right, go ahead and let us also know whether how is it working, what are your results. Yep. Anything else? Any doubts? Any questions? Yeah. Feel free. We have some time. If you have understood, fantastic. If you have not understood, would like to ask any question. If you would like to see any other pair, uh, how to do paper trade on strike. Sanjeev ji, you don't have to do paper trade on strike, but you can use a strike. It is an analytical tool. So what you can do is, you can, let's take one pair, ICICI Bank and HDFC Bank. You can select a daily time frame chart and then try to see. Now what is the thing? Now the ratio is going down. See, this ratio is going down. Okay. So now if the ratio is going down, you go to RRG. Okay, when you go to RRG, both are banks, so you can select Nifty Bank. All right,
And in Bank Nifty, you select ICICI Bank and HDFC Bank. All right, so here we go. Okay, so ICICI Bank is headed towards the leading quadrant. So very soon it can outperform, and HDFC Bank is headed towards the lagging quadrant over here. So it can underperform. So this combined with this indicator ratio is indicating that yeah, we can buy ICICI Bank and sell HDFC Bank. So if you want to do a paper trade, what you can do is try to understand that okay, keep the value same. ICICI Bank over here is 1348. All right, so you can write down the dates over here. Let's say 29, 30. So we'll start off with 2nd April. Yeah, so you will say buy ICICI Bank. Uh, what is the lot size of ICICI Bank? Okay, or if you want to trade in cash, try to make sure that uh, you deal with exact numbers. So let's say if you are inputting 1 lakh rupees over here, but for that again, if you are trading in cash, you will need to have certain deliveries of ICICI Bank or HDFC, or else they will not allow you to short. So better is to use futures. All right. So what is the rate? 1348. 1348. And HDFC Bank, you can say sell. Okay, what is the price of HDFC Bank? So let me just select HDFC Bank divided by ICICI Bank, add a pair. So HDFC Bank 1828. 1828. All right. Now try to understand what is happening, which is going up by more percentage and which is going down by more percentage. You will understand over here, and this is how you can do some paper trade. Try to just gauge it. Oh, my screen was not shared. I'm so sorry. Yeah. So if to do a paper trading, let's say ICICI Bank and HDFC Bank, what we saw was that the ratio is going down. Okay, ratio is going down. So ICICI Bank sell. Sorry, over here, what will happen is we have to sell ICICI Bank and buy HDFC Bank. Why? Because the ratio is going down. Okay, ratio is going down, and over here you can see that ICICI right now it is in the left hand side of the quadrant, which indicates that it is underperforming Bank Nifty. Okay, but again, this is comparing ICICI Bank to Bank Nifty and HDFC Bank to Bank Nifty. So probably this could not be a good way to trade ICICI and HDFC. If you are looking only at ICICI Bank, then you look at Bank Nifty. Okay, you compare ICICI and Bank Nifty, and then accordingly, if ICICI is coming into the leading quadrant, then you can buy ICICI and sell Bank Nifty. So this is one thing that you can do. Okay. Okay. Any other doubts? Any other questions? Somebody was asking me earlier about EMA and DMA. uh, ईएमए और डीएमए के बारे में भी बताइए. सो रंजीत कुमार, ईएमए जो है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ओके, सो सपोज मैं निफ्टी का चार्ट ओपन अप करता हूं. ओके, डेली चार्ट है और यहाँ पे इंडिकेटर में डालता हूँ, एक ईएमए डाल रहा हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. और डीएमए मतलब जनरली अगर हम लोग जब डीएमए बोलते हैं तो उसका मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज. ओके, तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज और एक निकाल रहा हूँ. ठीक है, ईएमए को ये दोनों की सेटिंग्स में जो है ना, इसको चेंज करके 200 डे डाल देता हूँ
और ईएमए को जो है उसको मैं ऑरेंज कलर डाल देता हूँ मैं। ऑलराइट, ओके। और जो सिंपल मूविंग एवरेज है डीएमए, उसको मैं ब्लू ही रखता हूँ, लेकिन उसका जो लेंथ जो है वो भी 200 डे कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो है डीएमए, 200 डे मूविंग एवरेज सिंपल। और जो ऑरेंज लाइन है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मतलब जो करंट डेटा जो है उसके ऊपर ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ऑलराइट, सो दोनों का डिफरेंस, दोनों 200 दिन का ही एवरेज है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंसेस है। और अभी फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी जो है ना, ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच में स्क्वीज हो गई है। ठीक है, लास्ट टाइम भी दोनों मूविंग एवरेज के पास आकर के निफ्टी ने करेक्शन दे दिया था। उसके पहले एक बार ऊपर जाकर के वापस करेक्शन दे दिया था। उसके पहले दो बार ये दोनों लेवल जब एकदम पास में थे, ओके, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से स्क्वीज कर दिया था। ओके, सो दोनों ही मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है। और यू कैन वेट के पास्ट में पता है कि ठीक है ये 200 डे के ऊपर जाकर के नीचे आया, ऊपर जाकर के नीचे आया, तो ऑलरेडी दो बार हो चुका है, तो तीसरी बार अभी एक बार ऊपर निकाला, तो इस बार शायद से सस्टेन हो जाए। ऑलराइट, सो ये बेसिक डिफरेंस है डीएमए और ईएमए के बीच में। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी। कोई भी डाउट्स हो रिलेटिंग टू द प्लेटफॉर्म, स्ट्राइक का प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं, तो कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है या कोई समझ में चीज नहीं आ रही है, तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। ऑलराइट, रेशियो चार्ट स्पेशली, अगर रेशियो चार्ट्स के बारे में अगर कोई डाउट्स हो या कुछ हो, तो डेफिनेटली आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे करना है, तो यस, डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है लिंक, और वो लिंक पे आप क्लिक करके अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेगा। डिस्काउंट्स के साथ प्राइसिंग है 4700 रुपीज फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, और 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए 2600 रुपीज है। तो जो भी आप सब्सक्राइब करते हो तो अराउंड 400 रुपए के आसपास पर मंथ आ रहा है। ठीक है, अगर आप पूरे 6 महीने या 1 साल का एक साथ सब्सक्राइब करते हो तो। और एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो आप एक बार जरा नाम लिख करके बता दीजिएगा, सो बैकएंड टीम से कोई आपको कॉल करेगा और उसको एक्टिवेट करने में हेल्प कर देगा। एनी अदर डाउट्स, क्वेश्चंस? यस सर। So if there are no doubts or questions, like can we wind up the session then? Yeah, let me know quickly in the comment section. Yeah. Okay, Ashutosh Jaiswal, great. All right, thanks. संजीव काले जी, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, हाउ टू पेपर ट्रेड ऑन स्ट्राइक। edge with hedge. Okay, so I hope you've gone through the YouTube videos, right? HS, okay, I will be waiting. All right, cool. So have a great Saturday evening and a long weekend. Sunday and Monday also is a trading holiday. So wish you all the very best. Till then, have fun. Bye bye.